So hello everyone, in this video we are going to perform 89 questions in few minutes. Okay, so I will show you the question, you have to answer me. So basically ये जो हमारा टेस्ट है वो साइकेट्री का है और ये क्वेश्चंस अगर आप कंप्लीट फुल मार्क्स ले लेते हैं इस टेस्ट के अंदर तो आप सोच सकते हो कि आपकी जो साइकेट्री है वो काफ़ी स्ट्रांग है. So let's start it. So the question number 1, you can see it's over here in front of you. So you have few minutes, you have to give me the answer. The nurse is planning care with a Mexican client who is diagnosed with a depression. The client believe in Mal-Ozo and they use treatment by the root healer. The nurse should do which of the following? तो guys इनमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? So let me tell you. So basically the answer will be option number 4. इन्वॉल्व द रूट हीलर, क्योंकि यहाँ पर आप पेशेंट के जो बिलीफ्स हैं उनको मद्देनजर रखकर आंसर दे रहे हो कि हम आपके जो भी जो जिसके ऊपर भी आप विश्वास करते हो हम उसे भी बुला रहे हैं. लेट मी गिव यू द रैशनल इंक्लूडिंग द रूट हीलर गिव्स क्रेडिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट टू द क्लाइंट कल्चर बिलीफ्स. तो वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दी जा रही है तो हम इसे फॉलो करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर अ पीरियड ऑफ अनसक्सेसफुल ट्रीटमेंट विद द अलावल अ वुमन डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन टू स्विच टू पेरनेट. तो इस तरफ आपने स्विच किया है. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करते कि यस इस पेशेंट को समझ में आ गया साइड इफेक्ट्स. सो गाइस let me just give me the correct answer. The correct answer will be option number 3. I must refrain from eating aged cheese and yeast products because जो हमारा टायरामिन होता है जो चीज कंटेनिंग है, so ये टायरामिन what will happen, it will basically increase, it will lead to hypertension. So let me give you the rationale. Cheese and yeast products contain tyramine, okay, and which the client should avoid to prevent a negative interaction with the pyranate and a monooxidase also, MAOIs inhibitors, and sodium will not interact with the pyranate and neither exercise nor sugar need to be limited. But आप चीज को avoid करेंगे क्योंकि interaction कर सकता है. Now let's see question number 3. A client is scheduled for the first ECT, okay, treatment in the morning. The client has been unable to sleep, वो सो नहीं पा रहा है, but 10 बजे वो रिफ्यूज कर रहा है कि मैं दवाई नहीं लूंगा. Okay, the client is still unable, client अभी भी सो नहीं पा रहा है, 11:15 हो चुके हैं. क्या ऑर्डर आप मेंटेन करके रखेंगे? So guys, the option are in front of you. The first answer will be, the first sequence will be option number 1. Sit quietly with the client. सबसे पहले आप पेशेंट के पास जाके आराम से बैठ जाइए. वो डिप्रेसिव पेशेंट है जिसे ECT जो है वो मिली है. Well, it's not mentioned here कि वो डिप्रेसिव पेशेंट है, but we are considering it कि ECT वाला पेशेंट है और दवाई लेने से मना कर रहा है, तो आप शांति से उसके पास जाके बैठ जाएंगे. देन आफ्टर आप डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक कंसर्न्स, आप उससे बातचीत करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है. एंड देन आफ्टर ऑफर द यूज ऑफ MP3 प्लेयर, फिर आप उसको बोलोगे थोड़ी देर गाने सुन लीजिए. एंड देन आफ्टर आप उसे इंकरेज करेंगे कि आप ये मेडिसिन खा सकते हैं. Next question we have, that is 4th. The client is receiving 6 mg of salicylic, okay, transdermal system every 24 hours for major depression. The nurse should just teaching about MSAM to be effective when the client make which statement. इनमें से कौन सी ऐसी बात उसने बोली है जिसको ध्यान में रखकर आप सोच सकते हो कि हाँ काफी सही है, this is like the correct statement. Okay, so the nurse should just teaching about this to be effective. कौन सी ऐसी सही बात बोली कि आपको लग रहा है कि हाँ ये इफेक्टिव टीचिंग थी? I need to avoid using the sauna at the gym. Okay, I can cut the patch and use a smaller piece. I need to wait until the next day to put a new patch. If it falls off, I might gain at least 10 lbs. तो well guys, ये जो ट्रांसडर्मल पैच आपने लगाया है, अगर वो अवॉइड करेगा सोना बाथ, तो एक सोना बाथ होता है, आई थिंक एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ इट. तो अगर ये पैच लगा हुआ है और आपको अवॉइड करना चाहिए सोना बाथ को, क्योंकि उससे पसीना आएगा एंड द पैच विल बी रिमूव वेरी इजीली, सो यू हैव टू अवॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अ क्लाइंट हैज बीन टेकिंग 30 mg ऑफ duloxetine hydrochloride twice daily for 2 months because of depression and ache and pain. While interacting, okay, with the nurse, the client discloses a pattern of drinking a 6-pack of beer daily for the past 10 years to help with sleep. What should the nurse do first? क्या करना चाहिए उसको इस ऑप्शन, इन ऑप्शंस के हिसाब से? So guys, the answer will be of question number 5 will be 3. Okay, report the client beer consumption to the primary healthcare provider because in drugs के साथ alcohol consume करना it's bit difficult. So let me show you the rationale. The nurse should report the client beer consumption to the primary healthcare provider. Duloxetine should not be administered to a client with renal or hepatic insufficiencies because the medication can elevate the liver enzymes and together with substantial alcohol use, okay, and can cause liver injury.
सो गाइस ये जो आपकी ड्रग है डुलोक्सिटीन हाइड्रोक्लोराइड, ये बेसिकली आपके लीवर के जो इंजाइम्स होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, उनको क्या करेगी, एलिवेट करेगी। तो कुछ भी आप इसके साथ दोगे दैट विल बी डैमेज्ड एंड दैट विल नॉट शो द इफेक्ट्स। तो अगर पेशेंट यहाँ पे अल्कोहल ले रहा है तो जो थ्रेश होल्ड उसको मिलता था उस अल्कोहल को पीने से वो उसे नहीं मिलेगा एंड ही विल ड्रिंक मोर, सो इट विल क्रिएट अ इंजरी टू द लीवर, सो वी हैव टू अवॉइड दिस थिंग, ओके, we have to inform. Next question number 6. A client was admitted to the inpatient unit 3 days ago with a flat affect. Flat का affect का मतलब है no emotions, कुछ भी वो खास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, and psychomotor retardation, anorexia, hopeless, suicidal ideation. The primary health care provider prescribed 75 mg of venlafaxine extended release TC to be given every morning. The client interacted minimally with the staff and spent most of the time day in his room. As the nurse entered the unit at the beginning of the evening shift, the client is smiling and cheerful and appears to be relaxed. What should the nurse interpret as the most likely cause of the client's behavior? What do you think? What will be the reason behind it? You can pause the video and you can select the correct answer, whichever according to you. So guys, the correct answer will be here is option number 2. The client's sudden improvement calls for the close observation by the staff. तो अगर वो दवाई ले रहा है, ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है दैट पेशेंट शुड बी, यू नो, द क्लाइंट सडन इंप्रूवमेंट कॉल्स for the close observation by the staff. Let me give you the rationale, which is very important. The client's sudden improvement, decrease in anxiety most likely indicate that the client is relieved because he has made the decision to kill himself. इसीलिए वो थोड़ा शांत घूम रहा है and may now have the energy to complete the suicide. ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, अलग अलग तरीके से। तो कभी भी कोई डिप्रेसिव पेशेंट जो अपने आप को हार्म करना चाहता है और अब वो दवाई खा रहा है तो आपको थोड़ा अवेयर हो जाना है, क्योंकि हो सकता है कि वो पेशेंट के अंदर अब ताकत आ जाए उस सुसाइड को अटेम्प्ट करने की। तो क्लोज सुपरविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. The client is taking 50 mg of lamotrigine daily for bipolar depression. The client shows the nurse a rash on his arm. What should the nurse do? Nurse को क्या करना चाहिए? Report the rash to the primary healthcare provider. Explain that the rash is temporarily adverse effect. Give the client an ice pack for his arm. Question the client about the recent sun exposure. So guys, the answer for this question will be report the rash to the primary healthcare provider. Because lamotrigine से उसको अभी भी ली है उसने बाइपोलर के लिए और उसकी बाजू पे रैश यानी कि उसको एलर्जी हुई। तो लेट मी गिव यू द रैशनल. The nurse should immediately report the rash to the primary healthcare provider because lamotrigine can cause Stevens-Johnson syndrome, जो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ओके, a toxic epidermal problem, okay, and necrolysis. The rash is not temporary adverse effect. Okay, giving the client an ice pack, questioning the client about the recent sun exposure are illogical, irresponsible. So let's move on to another question. Question number 8. The nurse is reviewing the laboratory report with the client lithium level taken the morning prior to administering the 5 p.m. dose of lithium. The lithium level is 1.8 milliequivalent per liter. The nurse should what? Guys, you should be aware of the normal lithium, what are the normal lithium doses and the therapeutic index. So you have to give me the answer. What will be the answer of this question? So guys, nurse review कर रही है laboratory report को client की, okay, जिसने मॉर्निंग प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन में 5 बजे को लिथियम का डोज लिया था और लिथियम का लेवल 1.8 आया है, तो व्हाट विल बी द एक्शन? सो गाइस, होल्ड द 5 पीएम डोज ऑफ द लिथियम. तो 5 बजे की जो डोज जो आप एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं उसे होल्ड कर दीजिए, क्योंकि आपका जो लिथियम का लेवल है वो क्या है, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. लेट मी गिव यू द रैशनल. सो द नर्स शुड बी होल्ड द 5 pm dose of lithium because a level of 1.8 milliequivalent per liter can cause adverse reactions including diarrhea, vomiting, drowsy, muscle weakness and lack of concentration, which are the early sign of lithium toxicity. The nurse should report the lithium level to the primary healthcare provider including any symptom of toxicity. Administering the 5 pm dose of lithium, give the client lithium with 8 Us 236 ml of water. Giving it after super would result in an increase in the lithium levels and thus increasing the risk of lithium toxicity. So be aware of it. Next, question number 9. So in the question number 9 you can see a nurse is conducting a psycho educational group for family members of client hospitalized with depression.
एंड विच फैमिली मेंबर स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर एडिशनल टीचिंग, इनमें से कौन सी ऐसी बात बोली गई है उस फैमिली मेंबर द्वारा जिसको सुनकर आपको लग रहा है कि इसे तो और जानकारी की जरूरत है, यानी वो कुछ गलत बोल चुका है। सो माई हस्बैंड विल स्लोली फील बेटर एज हिज मेडिसिन टेक अफेक्ट ओवर द नेक्स्ट 2 to 4 weeks, ओके। सो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि माई हस्बैंड विल स्लोली फील बेटर एज हिज मेडिसिन टेक इफेक्ट, my wife will need to take her antidepressant medications, go to group to stay well, my son will only need to attend outpatient appointments when he start to feel depressed again, and my mother might need help with grocery shopping, cooking, cleaning for a while. So guys, एक nurse conduct कर रही थी, educational group था family members of client hospitalized with depression, okay, and which family member statement indicate the need for additional teaching. So guys, here you can see the option number 3, my son will only need to attend outpatient appointments when he start to feel depressed again. No, अगर कोई डिप्रेस फील कर रहा है इस पॉइंट पे उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट पूरी लेनी है, ना कि सिर्फ आउट पेशेंट. सो लेट मी गिव द रैशनल of question number 9. Additional teaching is needed when the family member who state her son only need attempt outpatient appointments when he starts to feel depressed again. Compliance with medication and outpatient follow-up are the key in preventing relapse, okay, rehospitalization. The statement expressing expectation of feeling better as medication take effect, needing medicine with group therapies to stay well, okay, and need help for that. So guys, here the answer will be option number 3. Next, question number 10. A 16-year-old client is prescribed 10 mg of paroxetine, okay, Paxil, at bedtime for major depression. Now, the nurse should instruct the client and parent to monitor the client closely for which adverse effect he should be aware of. Paroxetine अगर कोई बेड टाइम पे ले रहा है तो क्या हो सकता है? Headache, nausea, fatigue, agitation. So guys, you have to tell me the answer. The answer will be agitation. Option number 4. So the patient will experience agitation. So the nurse should instruct the client and parent to monitor the client closely for which adverse effect agitation. Okay. So paroxetine ले रहा है, rational है इसके पीछे. A nurse closely monitor the client with taking paroxetine for the development of agitation, which could lead to self-harm in the form of suicide attempt. And headache, nausea, fatigue are the transient adverse effect of the paroxetine. So आपको ध्यान रखना है इस बात का. Next, question number 11. A client diagnosed with major depression spend most of the day lying in bed with the sheet pulled over his head. सारा दिन वो बस यही कर रहा है. Which of the following approaches by the nurse is most therapeutic? इनमें से कौन सी ऐसी अप्रोच है जो सबसे ज्यादा थेरेपेटिक आपको लग रही है? Option A, wait for the client to begin the conversation, initiate contact with the client frequently, sit outside the client's room, question the client until the client respond. Fourth option is incorrect. आप ऐसे इरिटेट नहीं कर सकते हो और पेशेंट का वेट करें, वो ऑलरेडी डिप्रेसिव में है, आप उसका पता नहीं वो कभी बात करेगा तो आप इंतजार ही करते बूढ़े हो जाओगे, राइट. बट द ऑप्शन नंबर 2, इनिशिएट कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट फ्रीक्वेंटली, यू नो, बीच बीच में उसको थोड़ा गैप दो, फिर बीच बीच में आप पूछ सकते हो. So here the question number 11, the option number 2 will be the correct. Next, question number 12. A client exhibit a flat affect, psychomotor retardation, depressed mood. The nurse attempt to engage the client in an interaction, but the client does not respond to the nurse. Which response by the nurse is most appropriate? So guys, what do you think? Option number 1, I will sit here with you for 15 minutes. I'll be come back a little bit later to talk. I'll be find someone else for you to talk with. I'll get you something to read. So guys, in the question number 12, the option 1 is the correct answer. I will sit here with you for 15 minutes. Let me give you the rationale. The most appropriate action for the nurse to remain with the client even if the client does not engage or doesn't want to engage, okay, in the conversation with the time. So the client with severe depression may be unable to engage in an interaction with the nurse because the client feels worthless, okay, and lack of necessary energy to do so. However, the nurse presence convey acceptance, okay. So I'll sit here with you for 15 minutes. So कहीं ना कहीं this will increase, you know, patient के अंदर थोड़ा सा effect आएगा कि हाँ वो बात कर सकता है आपसे, तो it will be like better option. Next, question number 13. After a few minutes of conversation, a female client who is depressed weirdly asks the nurse, okay, why pick me to talk to? Go talk to someone else. Which of the following replies by the nurse is the best?
अगर कुछ इस प्रकार से कन्वर्सेशन हो रही है, क्लाइंट आपको कुछ इस प्रकार से बात बोल रहा है, तो व्हाट यू थिंक? आई एम असाइन टू केयर फॉर यू टुडे इफ यू विल लेट मी। ये थोड़ा सा इट्स लाइक नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। You have a lot of potential and I would like to help you. This is also somewhere correct, but still, the female client who is depressed really asks the nurse, तो वो, which pick me to talk to. So go to talk someone else. तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा उदास और गुस्से में भी है. So अपनी तारीफ सुनकर तो उतना खुश नहीं होगा. I will talk to someone else later. That is also not correct. I'm interested in you and want to help you. तो यहाँ पे you have a lot of potential. I would like to help you. Want to help you. Both are almost same, but I'm interested in you. You have a lot of potential. You have a lot of potential. कहीं ना कहीं false, false reassurance दे रहा है पेशेंट को. तो आप उसकी एक झूठी तारीफ या कुछ झूठी बात बोल रहे हो, झूठी तारीफ करने की कोशिश कर रहे हो. बट यहाँ पे I'm interested in you. You are saying your truth, in which you literally interested in the patient, right? Because you want to talk to them. So that will be the correct approach, other than saying you have a lot of potential, blah blah. So we won't do that. Next question number 14. A client is receiving Paroxetine, again Paroxetine. It shows that this drug is like really important. You have to do some more research about this drug. So Paroxetine 20 mg every morning. After taking the first 3 doses, the client tells the nurse that the medication upset the stomach, agitation, stomach ache. All right. Which of the following instructions should the nurse give to the client? Take the medication an hour before breakfast. Take the medication with some food. Take the medication at bedtime. Take the medication with 4 ounces of orange juice. So guys, अगर वो उसको स्टमक में अपसेट कर रही है तो हम उसे बोलेंगे कि आप इसे कुछ खाने के साथ लीजिए. So take the medication with some food. It will be really great because वो स्टमक अपसेट को कम करेगा. Question number 15. A primary healthcare provider prescribe Fluoxetine, okay, orally every morning for 72-year-old client with depression. Which transient adverse effect of the drug remain immediate action by the nurse? So which transient adverse effect of this drug require immediate action by the nurse? Nausea, dizziness, sedation and dry mouth. So guys, what do you think? What will be the answer of question number 15? Okay, so you have to give me the answer. तो आपको बताना कि इनमें से adverse effect of the drug immediate action लेने के लिए कौन सा वाला होगा. So guys, the option number 2 will be the correct answer, dizziness. Let me give you the rationale. The presence of dizziness could indicate the orthostatic hypotension, which may cause injury to the patient from falling. So nausea, sedation, dry mouth do not require immediate attention, but dizzy होना fall हो सकता है, तो that will be the priority. Question number 16 in front of you. Which of the following statement by the client taking Trazodone, okay, as prescribed by the primary healthcare provider indicates to the nurse that further teaching about the medication is needed. इनमें से कौन सी बात बोलने पे लग रहा है कि इसको और ज्यादा चाहिए, मदद की जरूरत पड़ेगी, इसको समझाना पड़ेगा. I will continue to take my medication after a light snack. Taking desire at night will help me to sleep. My depression will be gone in about 5 to 7 days. I won't drink alcohol while taking desire. So guys, basically जो ड्रग है ट्रेजोडोन, ये आपको कहीं ना कहीं मदद करती है, लाइट स्नैक्स के साथ लेना है, और ये रात को नींद भी अच्छी आएगी पेशेंट को. लेकिन इससे 5 से 7 दिन के अंदर डिप्रेशन चला जाएगा. दैट इज नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट ट्रू. इट्स अ फॉल्स रीअश्योरेंस, और पेशेंट अपने आप को दे रहा है, तो ये गलत पॉइंट है. तो आप इसी पे उसको और पढ़ाएंगे. क्वेश्चन नंबर 17. A 62-year-old client with severe depression, psychotic symptom is scheduled for the ECT tomorrow morning. The client daughter asks the nurse, how painful will the treatment be for mom? The nurse should respond by saying which of the following? Option number 1, your mother will be give something for pain before the treatment. Is that true? The primary healthcare provider will make sure your mother does not suffer needlessly. Okay, so आप बता रहे हैं, रिस्पॉन्ड क्या करोगे आप? Your mother will be sleep during the treatment, will not be in pain. Your mother will be able to talk to us, let us if she is in pain. तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि ईसीटी के अंदर हम लोग पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट्स, ये सब चीजें देते हैं, एंड पेशेंट विल नॉट बी कॉन्शियस. सो यू हैव टू मेंशन दिस थिंग. योर मदर विल बी asleep during the treatment and will not be in pain. तो आपका दिस विल बी द करेक्ट आंसर. Next question number 18.
during a group session, a client who is depressed tell the group that he lost his job. Which of the following response by the nurse is best? इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स है जो कि बेस्ट होगा? It must have been very upsetting for you. Would you tell us about your job? You will find another job when you are better. You were probably too depressed to work. So guys, what do you think? ग्रुप सेशन के दौरान अगर एक कोई क्लाइंट डिप्रेस्ड है, ग्रुप के अंदर tells the group that he lost his job, which of the following response by the nurse will be the best? It must be very upsetting for you. That will be the correct answer, क्योंकि यहाँ पे आप पेशेंट को थोड़ा सा रीअश्योर कर रहे हो, सिंपैथी एम्पैथी कंडीशन टाइप की रिस्पॉन्स आप दे रहे हो कि आप टेंशन मत लो, आपको काफी बुरा लग रहा होगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. सो दैट काइंड ऑफ बिहेवियर यू विल शो. Next, question number 19. A male client who is very depressed exhibits psychomotor retardation, a flat affectopathy. The nurse observed the client to be in need of grooming and hygiene. Which of the following nursing action is most appropriate? So what will be the answer? Question number 19. So guys, the correct answer will be option number 4. Option number 4 is the correct answer. Okay, so option number 4 will be the correct answer. What is the fourth option? Stating to the client that it's time for him to take a shower. That will be the correct answer. Next, question number 20. When developing the teaching plan for the family of a client with severe depression who is to receive ECT therapy, which of the following information should the nurse include? इनमें से कौन सी बात है जो include करनी चाहिए है? Some temporary confusion and disorientation immediately after the treatment is common. क्या ये बात होती है? तो आपको पता होना चाहिए. During an ECT treatment session, the client is at risk for aspiration. That is also somewhere true. Client with severe depression usually do not respond to ECT. Okay, क्या ये सब बात सही है? The client will not be able to breathe independently during a treatment. क्या ये बात सही है? So guys, some temporary confusion and disorientation immediately after treatment is common. ये बहुत ही ज्यादा common चीज है और यही आप पेशेंट के रिलेटिव को बताएंगे. Next, question number 21. Which of the following comment indicate that a client understand the nurse teaching about sertraline? Okay, तो इनमें से कौन सी टीचिंग इंडिकेट कर रही है कि वो समझ गई सारी बात? Zoloft यानी कि sertraline will probably cause me to gain weight. क्या ये वजन बढ़ाती है? This medicine can cause delayed ejaculations. क्या ये डिले कर देते हैं ejaculations को? Dry mouth is a permanent side effect. क्या ये permanent side effect है dry mouth? I can take my medicines with St. John's wort. So guys, what will be the correct answer? The answer will be this medicine can cause delayed ejaculation. Let me give you the rationale. Sertraline, like other selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI, जो कि हम एंटीडिप्रेशन में यूज करते हैं, as these drugs are basically cause decreased libido को कम कर देती है, sexual dysfunction such as delayed ejaculation in men, and inability to achieve orgasm in women also. SSRI do not typically cause weight gain, and may cause loss of appetite and weight loss. Dry mouth is a possible side effect, but it is temporary. The client should be told to take sips of water, suck an ice cubes, chips, and use sugarless gums and candy. Okay, all right. So this is the main important point. The answer will be option number 2. 22. The client with reoccurring depression will be discharged from the psychiatric unit. Which suggestion to the family is best to help them prepare for the client's return home? कौन सा suggestion family के लिए best रहेगा to help them prepare for the client's return home? Discourage visitors while the client is at home. तो guys, question क्या बोल रहा है कि client reoccurring depression, बार बार डिप्रेशन हो रहा है, will be discharged from the psychiatric ward. वो बस जल्द डिस्चार्ज होने वाला है. इनमें से कौन सा सजेशन बेस्ट रहेगा ताकि आप प्रिपेयर कर सको क्लाइंट टू रिटर्न होम? डिस्करेज द विजिटर व्हाइल द क्लाइंट इज एट होम, प्रोवाइड फॉर अ शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज आउटसाइड द होम, इन्वॉल्व द क्लाइंट इन यूजुअल एट होम एक्टिविटीज, इनकरेज द क्लाइंट टू स्लीप एज मच एज पॉसिबल. सो गाइज द आंसर विल बी इन्वॉल्व द क्लाइंट इन यूजुअल एट होम एक्टिविटीज. Okay, so it is best to involve the client in usual at home activities as much as the client can tolerate them, and discouraging visitors may not be in the client's best interest because visits will support significant
significant others will help reinforce supportive relationships. तो ऐसा नहीं आप डिस्करेज नहीं करेंगे, आप बढ़ाएंगे ताकि उसको थोड़ा अच्छा फील हो, ओके लेकिन आपको इन्वॉल्व करना है क्लाइंट को इन यूजुअल एट होम एक्टिविटीज ताकि वो थोड़ा बेटर फील कर सके, उसके लिए बेस्ट रहे. क्वेश्चन नंबर 23, अ क्लाइंट विद मेजर डिप्रेशन इज टू डिस्चार्ज होम टुमारो. कल उसे आप भेजने वाले हो. When preparing the client discharge plan, which of the following area is most important for the nurse to review with the client? So which of the following areas is most important for the nurse to review with the client? Future plans for going back to home, पूछ सकते हो आप. A conflict encountered with another client, result of psychological testing, medication management with outpatient follow-ups. So what do you think? आप कल discharge करने वाले हो, प्रिपेयर कर रहा है डिस्चार्ज प्लान. व्हाट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिव्यूज एरियाज? सो गाइस द ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23, द ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. मेडिकेशन मैनेजमेंट विद आउट पेशेंट फॉलो अप्स. द RASH is medication management with outpatient follow-up of the vital importance to discuss with the client before discharge. It's very important. The nurse teaches and clarifies any question related to medication and outpatient treatment. तो ध्यान रखना यहाँ पे किसी भी पेशेंट, किसी भी मेजर डिप्रेशन पेशेंट को घर भेजो तो दवाई वगैरह के साथ उसका जो लिंक है वो इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. Client with major depression and psychotic feature is admitted involuntarily to the hospital. He will not eat because his balls have turned to jelly, okay? And which the client state is punishment for his wickedness. उसे कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा है. The client's request to leave the hospital. तो गाइस मेजर डिप्रेशन में है और साथ में साइकोटिक फीचर्स भी वो दिखा रहा है. is admitted involuntarily to the hospital. He will not eat because his bowel has turned to jelly, which is the client's state is punishment of his wickedness. The client requests to leave the hospital. What will be your reaction? The nurse denies the request because commitment papers have been initiated by the primary healthcare provider. Which of the following should the nurse identify as the criteria for the client to be legally committable? तो इनमें से कौन सी पॉइंट है जो कि आपको लीगली कमिटेबल लगता है? इनमें से एविडेंस ऑफ साइकोसिस अगर होगा तो ये लागू हो रहा है. बीइंग ग्रेवली डिसेबल्ड, रिस्क ऑफ हार्म टू सेल्फ और अदर्स, या फिर डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस. इनमें से कौन सा जो डॉक्यूमेंट है, क्राइटेरिया है जो कि लीगली कमिटेबल है? सो गाइस द आंसर विल बी being gravely disabled. Okay, so the rationale behind it, criteria for commitment include being gravely disabled and posing a harm to self or others. Okay, so risk of harm to self or others is also it will be also included in this, but at the moment जो आपका particularly disabled और ये चीज important है. Okay, अगर कुछ हार्म वो कर रहा है, पोज कर रहा है, हार्म करने ही वाला है, नॉट रिस्क बट ही हैज डन समथिंग लाइक दैट, सो दैट विल आल्सो इंक्लूड इन दिस. दिस क्लाइंट इज नॉट थ्रेटनिंग टू हार्म हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ सुसाइड और टू हार्म अदर्स. तो एट द मोमेंट अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जो उसकी जो बातचीत है वो पर्टिकुलरली किसी को हार्म करने की नहीं हो रही है. ओके, तो इधर से हम लोग इसे यहां से इसे डिडक्ट कर देंगे, अदरवाइज ये ऑप्शन भी बन सकता था. Next, question number 25. A client who has been taking venlafaxine, okay, venlafaxine 25 mg per orally 3 times a day for the past 2 days state that this medication is not doing me any good. कुछ फायदा नहीं हो रहा है. I'm still so depressed. Which of the following response by the nurse is the most appropriate? So guys, the option number 3 will be the correct answer. It takes about 2 to 4 weeks to receive the full effect. तो ये आपको बोलना है ये जो ड्रग होती है लगभग 2 से 4 हफ्ता लेती है ठीक करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. द क्लाइंट स्टेट टू द नर्स, आई टेक citalopram, okay, 40 mg every day as my primary health provider prescribed. I have also been taking, okay, St. John's wort 750 mg daily for the past 2 weeks. Which of the following indicate that the client is developing serotonin syndrome? जब serotonin का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है. Select all that apply. This is very important question. आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है, कौन कौन से सिम्टम है जो कि जिनसे आप
को ये पता लगता है कि सीरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। और गाइस ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुकी हूँ साइकेट्री के अंदर, तो इसका आंसर आपको मुझे देना है क्वेश्चन नंबर 26। सो गाइस द आंसर विल बी 1 2 4 5, कंफ्यूजन, रेस्टलेस, डायफोरेसिस एंड अटैक्सिया। ये चार ऑप्शन जो हैं वो आपके 1 2 4 and 5 will be the correct answers. Next, question number 27. When teaching the client with atypical depression about foods to avoid while taking, phenelazine, which of the following should the nurse include? इनमें से क्या बात include होनी चाहिए जब आप teach कर रहे हो client को कि वो typical depression about foods to avoid, उसको avoid करने जब वो ये दवाई ले रहा है तो. So question number 27, the answer will be option number 2, salami. Let me give you the rationale because this is not Indian question. So phenelazine is a monoamine oxidase inhibitor, MAOI, and everybody know about this, which is involved to decomposition and inactivation of the non-epinephrine, serotonin, dopamine and tyramine. तो जो MAOIs होती हैं वो बेसिकली रोकती हैं कि सीरोटोनिन का, डोपामिन का, नॉन एपिनेफ्रिन का, टायरामिन, इन सब का लेवल बढ़े जो MAOIs होते हैं. And food high in tyramine, those that are fermented, pickled or aged, smoked, must be avoided because when they are ingested in combination with MAOIs, a hypertension crisis will occur. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि टायरामिन से हाइपरटेंशन पेशेंट को हो सकता है, इसीलिए जो सलामी है it is like your tyramine rich, so we have to avoid this. Some example include सलामी. इसके अलावा क्या हो सकता है जो नया लगे आपको सुनने में? बोलोगना, ओके, बोलोगना, BOLOGNA, dried fish, sour cream, yogurt, aged cheese and bananas, pickled herring, caffeinated beverages, chocolate, beer, red wine and alcohol-free beer. All these contain tyramine and we have to avoid because ये जो drug है आपकी particularly phenelazine, it's like your MAOI, so we have to prevent. Next we have question number 28. Okay, so question number 28, a client is taking, I think we have done, right? No, we are not done. We are with the same drug. A client is taking the phenelazine 15 mg per only 3 times a day. The client is about to administer 1 PM dose when the client tells the nurse about having a throbbing headache. Guys, throbbing headache, high BP. Which of the following should the nurse do first? तो अभी भी मैंने बताया ये MAOI की कैटेगरी में आती है, टायरामिन वाली ड्रग्स होती हैं एंड पेशेंट को हाइपरटेंशन क्राइसिस हो सकता है. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू ऑब्टेन द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट जस्ट टू मेक श्योर whether the patient is suffering from hypertension crisis or not. So the answer will be option number 4. Next, question number 29. So a female client with severe depression or weight loss has not eaten since admission to the hospital 2 days ago. से कुछ भी नहीं खाया भाई. Which of the following approach should the nurse include when developing this client plan of care to ensure that she eats? इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो आप करेंगे जिससे हो पाए कि वो कुछ खा ले? Serving the client her meal trays in her room, sitting with the client and spoon feeding if required, calling the family to bring the client food from home, explaining the importance of nutrition in recovery. So guys, question number 29, the answer will be option number 2, sitting with the client and spoon feeding if required, because the patient is like not fine, he is in severe depression. You have to be, for example, like a mother, nurse. Alright, next question number 30. After administering a prescribed medication to a client who has become restless at night and has difficulty falling asleep, which of the following nursing action is the most appropriate? कौन सा एक्शन आपको लगता है कि सबसे appropriate रहेगा? So the answer will be option number 1, sitting quietly with the client at the bedside until the medication takes effect. तब तक आपको वहां पर बैठे रहना है. The rationale will be to promote adequate rest 6 to 8 hours per night and to eliminate hyposomnia. The nurse should sit with the client at the bedside unit, until the medication takes the effect. तब तक उसको वेट करना है वहां पे. Next, question number 31. So we have question number 31 in front of you. Question number 31. Which of the following behavior exhibited by a client with depression should lead the nurse to determine that the client is ready for discharge? Option number A, interaction with the staff and peers, sleeping for 4 hours in the afternoon, 4 hours at night, verbalization of feeling in control of self and situations, statement of dissatisfaction over not being able to perform at work. So guys, the answer will be option number 3. वो बात कर रहा है verbalization of feeling in control of self
and situation. In this case, it is like okay, so ready, the patient is ready for discharge. All right, next question number 32. A client with a major depression and suicidal ideation has been taking bupropion and 100 mg per only 4 times daily for 5 days. Assessment revealed the client to be somewhat less withdrawn, able to perform activities of daily living with minimal assistance and eating 50% of each meal. At this time, the nurse should monitor the client specifically for what of the following behavior. So guys, question number 32, the answer will be 2, suicide attempt. Okay, at this time the nurse should monitor the client specifically for what following, suicidal attempts. तो अगर पेशेंट कुछ इस प्रकार का है, दवाई वगैरह खा रहा है, तो भाई सुसाइडल अटेम्प्ट को लिए देखिए, क्योंकि उसमें एनर्जी आ गई है अपने आप को किल करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 वी हैव हियर, which of the following outcomes should the nurse include in the initial plan for the care of for the client who is exhibiting psychomotor retardation, withdrawal, minimal eye contact and unresponsive unto the nurse question. So what do you think, what will be the answer? Which of the following outcomes should the nurse include in the initial plan of all these patients? So the client will initiate interaction with the peer, the client will participate in the milieu activities. Milieu is what? Environment. The client will discuss adaptive coping technique, the client will interact with the nurse. So first of all, the client will interact with the nurse. Let me give you the rationale of question number 33. In the initial phase of the care, the most appropriate outcome would be that the client will interact with the nurse. First, the client would begin interacting with one individual and with other clients in one-on-one contact, progressing towards informal group gathering and eventually taking part in the structured group activities. Next, question number 34. When preparing a teaching plan for a client about imipenem, which of the following substance should the nurse tell the client to avoid while taking the medication? तो guys, आप देख लीजिए यहाँ पे imipenem ले रहा है पेशेंट, इनमें से कौन सा सब्सटेंस शुड द नर्स टेल द क्लाइंट टू अवॉइड, उसको बिल्कुल भी वो नहीं लेना है. सो द आंसर विल बी अल्कोहल, बिल्कुल भी नहीं लेना है. ओके, सो इमिप्रोमाइन में अल्कोहल नहीं लेना है. रैशनल क्या है? इमिप्रोमाइन अ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट इन कॉम्बिनेशन विद अल्कोहल विल प्रोड्यूस एडिक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन. तो गाइस, अगर अल्कोहल कोई इमिप्रोमाइन के साथ लेता है जो कि ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है, then what will happen? The patient will CNS will be depressed like very severely, so avoid. Next, question number 35. A client with depression who is taking imipenem state to the nurse, my doctor want me to have an ECG in 2 weeks, but my heart is fine. Which response by the nurse is most appropriate? इनमें से कौन सा response सही रहेगा? Option number 1 is the correct answer. It's routine practice to have ECG periodically because there is a slight chance that the drug may affect the heart. तो ध्यान में रखना है, जो इमिप्रेमिन है जो अभी ऊपर पड़ी है वो हार्ट पे इफेक्ट आती है, और अगर अल्कोहल के साथ ली जाएगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है. तो ईसीजी करवाना जरूरी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट थेरेपी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड अलर्ट द नर्स टू पॉसिबिलिटी दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स. ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है. ओके, एंड कोलिनर्जिक्स आर पर्टिकुलरली पैरासिम्पैथेटिक्स. एंड व्हाट अबाउट एंटीकोलिनर्जिक्स? इट विल बी लाइक हमारे पास यहाँ पे एनर्जिक्स और कोलिनर्जिक्स आते हैं. जो कोलिनर्जिक्स होते हैं दीज आर बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक एंड एनर्जिक्स आर सिंपैथेटिक. तो एंटीकोलिनर्जिक मतलब कि आप कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक सिस्टम की बात कर रहे हो. सो पॉसिबिलिटी दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स. ट्रेमर एंड कार्डियक अरिथमियाज, sedation and delirium, respiratory depression and convulsions, urine retention, blood vision. तो आपको बताना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर पर्टिकुलर क्या आंसर हो सकता है. सो गाइस, अगर कोई इंसान यूरिन रिटेन कर रहा है और ब्लड विजन है, इसका मतलब है कि भाई वो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है. लेट मी गिव यू द रैशनल. सो बेसिकली एंटीकोलिनर्जिक्स which result from blockage of parasympathetic, which I told you, like sympathetic को इनिशिएट करेगा कहीं ना, क्योंकि कोलिनर्जिक का मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक और एंटी कोलिनर्जिक मतलब कि आप ब्लॉक कर रहे हो पैरासिम्पैथेटिक को, यानी कि सिंपैथेटिक कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है. सो नर्वस सिस्टम इंक्लूड द यूरिन रिटेंशन. तो यू आर जस्ट ब्लॉकिंग द पैरासिम्पैथेटिक. आपकी बॉडी के अंदर आप रिलैक्सेशन नहीं है, यू आर इन इमरजेंसी. और कभी भी कुछ भी शेयर आ जाता तो सब कुछ रुक जाता है, यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, ब्लड विजन हो जाएगा. ओके,
सो इंक्लूड यूरिन, ब्लड, ड्राई माउथ एंड कॉन्स्टिपेशन। तो जितने भी एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं वो सिक्रीशंस को ड्राई करते हैं, राइट। सो कहीं कहीं देखने को मिलेगा। एंड ट्रेमर्स, कार्डिक अरिथमिया, सेक्सुअल डिस्फंक्शन आर पॉसिबली साइड इफेक्ट्स, बट they are caused by increased non-epinephrine activity availability, not because of parasympathetic को block कर। Okay, so it's a question important one. Next question number 37. A client with depression who is taking doxepin 100 mg per orally at bedtime has dizziness on arising. Which of the following suggestions is the most appropriate? So guys, in this question you have these options. Option number B is the correct answer. Get up slowly and dangle your feet बिफोर स्टैंडिंग। आपको धीरे धीरे खड़े होना है क्योंकि उसको डिजीनेस हो रहा है उठते ही, राइट। तो कभी भी डिजी होता है पेशेंट, हमेशा उसे कहा जाता है कि आप स्लोली स्लोली उठिए, पहले अपनी टांगों को नीचे लटकाइए, उसके बाद बैठिए, उसके बाद खड़े होइए। क्वेश्चन नंबर 38. द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब मेटाजेपिन 30 mg per pc at bedtime, per orally at bedtime for the client diagnosed with depression. The nurse should do what? Give the medication as prescribed. Question the primary healthcare provider for the prescription. Request to give the medication in the morning and give the medication in three divided doses. So guys, the answer will be option number 4. Give the medication in 3 divided doses. तो आपको याद रखना कि मेटाजेपिन जो है आपको 3 अलग अलग डिवाइड डोज के अंदर पेशेंट को देना होता है। Question number 39. A client taking same mirtazapine is disheartened about 20 lb weight gain over the past 3 months, and the client tell the nurse, I stopped taking the mirtazapine 15 days ago. I don't want to get depressed again, but I feel awful about my weight. Which response by the nurse is most appropriate? उसको वेट गेन की टेंशन हो गई है, वो ये नहीं चाह रहा कि उसका कभी डिप्रेशन ठीक ही ना हो, वो चाहता है उसका डिप्रेशन ठीक हो, बट उसको वेट गेन का भी थोड़ा सा डर है। So what will be the correct response? Option 1, 2, 3 and 4. So guys, option number 4 will be the correct answer. I hear how difficult this is for you. Will help you approach the doctor about it. तो आप इसमें पेशेंट को reassurance दे रहे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कि आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ इसके बारे में। Next, when developing a teaching plan for the client about medication prescribed for depression, which of the following component is most important for the nurse to include? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इंक्लूड करना है? ऑप्शन 1 फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द मेडिकेशन, करंट रिसर्च, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एडवर्स इफेक्ट। सो गाइस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एडवर्स इफेक्ट इनकी मैनेजमेंट करना, कॉमन एडवर्स इफेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ओके, सो लेट मी टेल यू द रैशनल compliance with the medication therapy is crucial for the client with depression. Medication non-compliance is the primary cause of relapse among the psychiatric patients. Okay, therefore the nurse need to teach the client about managing common adverse effect to promote compliance with the medication, ताकि वो comply कर सके अपनी management के ऊपर। So guys, that's we are done with the first part. Now in the second part we are going to discuss more MCQs about related to these tests. So I hope आप लोगों को काफी इजी लगे होंगे क्वेश्चंस। अगर आपने अच्छे से साइकियाट्री पढ़ रखी है तो क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हैं और आपके एग्जाम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं। सो लेट्स मूव ऑन विद अनदर पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।